हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप टाइटल देखिए ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज है मेरे डॉटर का फर्स्ट बर्थडे। माय डॉटर she turned 1 year old today, and that's why this video is really special for us, and because we are traveling। उसके कारण मेरी डॉटर का जो बर्थडे है वो हम लोगों को मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था। मेरे मन में बहुत कुछ था but nothing worked as planned। We have got a cake and today we would be doing a cake cutting ceremony। कुछ फैंसी नहीं है and कुछ बड़ा नहीं है because this is not what we had planned। ये सब कुछ एकदम अचानक से ही एक दिन के प्लान में ही like day before yesterday only my husband he I don't know how you want to celebrate। Now I was really upset with him because you know I thought that he's not saying anything about it। तो उनके मन में already plans होगा, उन्होंने कुछ already decide करके रखा होगा। That is what I thought but day before yesterday when what do you think that we should do, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। I got really frustrated because you know you have not decided anything, at least you should have informed me well in advance कि मैं कुछ सोच लूँ। but because वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे और हम लोग यहीं पे ही थे because we are at in-laws house। so in-laws house के होने के कारण I thought maybe इनका कुछ प्लान होगा, so I didn't wanted to disturb that plan। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं। celebrate her birthday there and later you know when we go to our house then we can वो actually मेरा idea है कि after we go home I'll plan something because I don't want my daughter's birthday to you know just go like that। it's a simple कुछ just with a cake cutting। I actually wanted to make it really special जो नहीं हुआ but it's okay but anyways so now what I'm gonna do is अभी मैं ready नहीं हुई हूँ। I have to get ready। मैं quickly ready हो जाती हूँ। anyways it's about my daughter today so and you know what actually हम लोगों ने हरी बरी में जो कुछ भी ड्रेस हमने खरीदा मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर किए थे थोड़े दिन पहले। मैंने सोचा कि माय हस्बैंड ही विल प्लान समथिंग जो भी प्लान हो बट एटलीस्ट आई शुड हैव गुड ड्रेसेस। तो मैंने ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर कर लिए थे ऑलरेडी बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग वहाँ से मेरे इन-लॉज के घर से हम लोग निकल चुके दैट डे वाज द डिलीवरी। तो हम लोग ऑलरेडी निकल चुके थे एंड दैट्स व्हाई मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट मैं रेडी होंगी फिर आई गेट माय डॉटर रेडी एंड माय सन रेडी। वेयर इज वन मोर पैकेट ऑफ बलून? विल यू टेक इट? No, not me. You kept Then it. yeah, I had kept it here. No, I can't see it. Where is that? It's there. Okay, I found it. Okay, Yes. so now we have to blow the balloons. Don't bust the balloon. Don't. Yeah, exactly. Don't bust the balloons and go quickly get ready. Get your dress. I'm gonna put your dress. तो balloon से मैं लेके आई but I forgot to get the blower, so that's why I'm going to blow it manually. Okay. So ask your daddy also to blow the balloons. I can't blow alone. Then you look so. Blow the balloons. You can do. ये क्या है? Hey! Let's see. ऑलराइट, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा ड्रेस बहुत ही सिंपल है। ये मैंने बर्थडे के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदा था। ये एक्चुअली मैंने नॉर्मल ओकेजन के लिए खरीदा था, कैजुअल वेयर जिस बाहर आने जाने के लिए खरीदा था। बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्योंकि लाइक आई सेड ऑनलाइन डिलीवरी लेट हो गई और अभी मेरे को इसी से ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ये एक बार भी नहीं पहना है। तो आई एम फीलिंग यू नो गुड अबाउट इट बिकॉज जब तुम ड्रेस एक बार भी नहीं पहनते हो तो वो नया ही लगता है नो मैटर व्हाट, कितना सिंपल भी क्यों ना हो। एंड यू नो मैं आपको ये ड्रेस दिखा दूँ। एक्चुअली इट इज़ अ ड्रेस and उसके साथ you get this jacket which I really liked about this dress. That is the reason why I ordered. Alright,
सो ये ड्रेस है जो ऑलमोस्ट मेरे लिए एंकल लेंथ है। और जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो वो मॉडल पे जस्ट बिलो द नी दिखा रहा था, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है तो ये मेरे लिए एंकल लेंथ हो गया है। सो जस्ट वेयरिंग इट एज वन पीस विद दिस जैकेट एंड या सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली मैं, वेरी लाइट मेकअप। Yes, I am ready myself. Alright guys, so I am ready. मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली बिकॉज बर्थडे मेरा नहीं है, मेरी डॉटर का है। एंड अगर शायद मैं जैसा मेरा प्लान होता उसके अकॉर्डिंग अगर बर्थडे होता तो शायद मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से रेडी होती, बट क्योंकि बर्थडे बहुत सिंपल है तो मैंने अपना सब कुछ सिंपल ही रखा है, ड्रेस makeup and everything. So yeah, no makeup, just a light touches and then a lipstick and a kajal. So yeah, I am ready. मैंने मेरे बच्चों को भी रेडी कर दिया है और अब हम quickly in no time soon केक कटिंग करने वाले हैं। तो if you guys want to know, ये मेरा matte lipstick है और I just love the shade. The day when I'm wearing something ethnic, I would prefer wearing applying this lipstick and yeah, shade I'll post if you want to know the shade मैं बाद में description में डाल दूंगी, but as of now I'm getting late because the video is not about me, the day is not about me, it's about my daughter. So let's quickly go there. Ritzy, what you doing? You naughty! Come on, quickly come, let's do. Huh? What is this, oven? Yes. That's safe. I've already told you. This is not safe. This is not oven. Huh? Chalo. Let's cut the cake. Come, let's cut baby sister's cake. Look, it's oven. I showed you. No, it's not oven. It's safe. I showed you. No, I showed you. Come, quickly get down. Let's go. Let's cut baby sister's cake. Are you excited? Yay! Yay! Let me get the cake. You don't worry about it. I will take it out. See, apply powder, baby. Wait, let me apply powder. Wait, Ritzy, don't be naughty. Wait. I want to run. You want to run? You don't want to get ready? Huh? You don't want to get ready? Come. Daddy, the cat man run. I can't catch it because we don't have time, Ritzy. Chalo, quickly apply powder and then. Catch me. Okay, I will apply powder and then I'll catch you. Come quickly. Chalo, come. Ritzy, come. Let me quickly apply powder and then I'll catch you. Ritzy. Chalo, let me quickly apply powder and then I'll catch you. Ritzy, leave it. Come. Ritzy, I'll apply powder. Come. Yeah. Come here. I need to run and catch me. Ritzy, come quickly. Come. We have played already. Come. Ritzy. Okay, no cake cutting today. No cake cutting. Yeah, then come. Quickly come. Come to me. No cake cutting then. Okay? If you don't let me apply powder, then no cake cutting. Is that okay? No. What did you do with the camera? Huh? No, not me. You did. Hi, doll. Hi. What happened? Why are you crying? What happened? Why are you upset? I want to get the cake. You want to get the cake? Okay, open the fridge and get the cake. But be careful, okay? No. Where is it? Where's the cake? Okay, I think daddy already took it. Okay, you don't worry. Do one thing. Take all the balloons. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Take the balloons. Come. Take the balloons. Pick the balloons. I will get the cake. Okay. I don't want the balloon. I don't want to pick the balloon. Okay, I will take all the balloons. You take the cake. Go. Go quickly. So, let's see, you have to get the balloons, baby. You're not getting the balloons. Get the balloons. It's too late already. Get the balloons. Remove this and then you can cut the cake. Let me just remove it and you can cut the cake. You won't be able to open it. I will. You will open? No, you can't. You'll spoil the cake, baby. That is not letting me open the cake. No, you'll spoil it. Don't. You should listen to dad and mom. See? Daddy, where's it? Are you protecting her? She'll Good.
Come closer, Richi. You have to come closer to baby sister. Come closer to baby sister. Zevu. Happy birthday to Rita. How mean? It's her birthday. Happy birthday. Okay. She's also laughing. Happy birthday to Ziva. So okay, all right. So it is Ziva's birthday, but the thing is that he's super excited to cut the cake. So because Hey, she can't, wait. because she can't, so we will let Ritzy to cut the cake. Should I help you, baby? No, you're not my friend. You're not something good. You cut. I will just hold your hand. Don't. Okay. Happy birthday to you. You cut. See, you did already. I'm just holding your hand. No, not my hand. Oh, okay, fine. She'll just hold your hand. Daddy, I like it. I taste it. Oh. पूरा केक कटिंग और पूरा कैंडल ब्लो सब कुछ इसने ही किया है। ये बेचारी ने कुछ भी नहीं किया। ये अपना केक टच कर रही है तो भी ये उसे टच नहीं करने दे रहा है। डू यू सी? सो या सो दैट्स इट गाइस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये था मेरे छोटे से क्यूटी पाई का, क्यूटी पटूटी का बर्थडे। आई नो बहुत ही सिंपल था। या हम लोग हैं इस होटल में एंड आई रियली लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस होटल, स्पेशली द 3 रूम्स दैट वी हैव गॉट। लाइक इनिशियली जब हम लोग इस होटल में हम लोगों ने चेक इन किया था, इस होटल में जब हम लोग चेक इन हुए थे, तो द रूम दैट वी गॉट इनिशियली वी वर नॉट हैप्पी विद द रूम। बहुत ही डल था एंड थोड़ा सा फैसिलिटीज़ वी डेंट लाइक इट। तो मैंने मैनेजर को कॉल करके बोला कि ये क्या फैसिलिटी है, बिकॉज तो मैंने कहा कि वी हैव कम हियर फॉर माई बेबीज माई डॉटर्स बर्थडे एंड द फैसिलिटी दैट वी हैव गॉट वी आर नॉट हैप्पी विद इट। तो एट द मोमेंट मैंने थोड़ा सा ये कह दिया कि I'm a blogger or I am here for my daughter's birthday and to have a good time and to get some good pictures. So the moment he got to know about it, like he's like, ma'am, excuse me about that, and we will give you another room. The room that the first room that we had got, I think it was on some 4th floor it was. But then they again gave us this room which is on 11th floor, and the view from this room is just amazing. Bahar, like it has got a balcony and the view outside is just amazing. मैं वो room और वो आपको मैं दिखा दूँगी shortly, but as of now if you see that both the kids, they are digging into the cake and केक का पूरा मर्डर कर दिया बहुत ही बुरे तरीके से। अच्छा है कि बस वी फैमिली आर देयर, वरना वो जिस तरीके से उसने किया है कोई और नहीं खा सकता था ये केक। और देखिए इसको, देखिए ही इज ऑल इन्वॉल्वड इन एंजॉयिंग द केक। यू एंजॉयिंग द केक? You enjoying the cake? Yes. Look at your face first. See, look at your face. What is that? What is the mess? Look at the mess. Say hi to my followers. Say hi. Say hi to friends. Hi, and say subscribe to Mommy's channel. Say subscribe to Mommy's channel. Subscribe to Mommy's channel. Yeah, thank you. So yeah, so my son has done a shout out for me. He says subscribe to Mommy's channel, so please do that. All right, on that note, this video comes to an end. If you guys like this video, then please give this video a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel, which is Ira Bliss, if you're a first time visitor. And yeah, that's about it. Till the next time, I always think that I always मैं मेरे मन में सोच के रखती हूँ कि from going forward, like from now onwards, मैं वीडियो कंसिस्टेंटली बनाऊँगी, but
मेरे यू नो यूट्यूब चैनल को देख लीजिए. चैनल में जो वीडियोस, द फ्रीक्वेंसी विद विच आई पोस्ट द वीडियोस देख लीजिए, दैट हाउ कंसिस्टेंट आई एम. सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट आई डोंट नो, मे बी दैट डे विल ऑल्सो कम व्हेन आई एम गोइंग टू बी consistent